Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu-Alaikum. In today's video, I am going to solve the FGEI SST paper that was held on 1 June 2025. मैं ना सिर्फ इस पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी बल्कि मैं एक्सप्लेन भी करूंगी कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या और क्यों बनता है. Let's begin with the first question. Synonym of serendipity is. Serendipity means an accidental and fortunate discovery. ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? मिस एडवेंचर, कैलामिटी, प्रोविडेंस एंड फॉर्चून. मिस एडवेंचर का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, ये ऑपोजिट है सेरेंडिपिटी का. कैलामिटी, डिजास्टर और ट्रेजेडी, ये भी ऑपोजिट बनता है. प्रोविडेंस, डिवाइन गाइडेंस और इंटरवेंशन, सो दिस ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल. फॉर्चून मीन्स अ पॉजिटिव एंड अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट और गुड लक. This definition makes it the closest synonym of serendipity. So, this is the answer. His dash remarks at the conference alienated many of the attendees who found them offensive and inappropriate. ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि रिमार्क्स जो हैं वो ऐसे हैं जिसने बहुत सारे अटेंडीज को एलिनेट कर दिया है और ऑफेंसिव और इनअप्रोप्रिएट है. ऑप्शंस देख लेते हैं. फेलिसिटस, डेकोरस, एग्रीगियस, कमेंडेबल. फेलिसिटस का मतलब होता है वेल चूजन एंड अप्रोप्रिएट, सो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है. डेकोरस, प्रॉपर एंड पोलाइट, दिस इज ऑल्सो द ऑपोजिट. एग्रीगियस, आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग, ये जो है ये कॉन्टेक्स्ट के साथ फिट होता है. लास्ट है कमेंडेबल, मीन्स प्रेज वर्थी, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. The correct answer is egregious. Antonym of trepidation is. Trepidation का मतलब होता है fear और anxiety about something that may happen. Options हैं anxiety, confidence, depression, excitement. Anxiety जो है ये synonym बन जाता है. Confidence का मतलब होता है self assurance और feeling of certainty. Depression, it refers to extreme sadness. Excitement is a different emotion. So the antonym is confidence, which is the feeling of certainty. She studied hard, yet she didn't pass the exam. Choose the correct sentence structure. ठीक है, इस sentence में दो clauses हैं और दोनों ही independent clauses हैं. She studied hard, she didn't pass the exam. ठीक है, दोनों के दोनों क्या हैं? Independent clauses हैं which are joined by conjunction yet. So, it is a compound sentence. Simple sentence कौन सा होता है? Which has only one independent clause. Complex sentence में at least one independent clause and one dependent clause. Compound complex sentence has multiple independent clauses and at least one dependent clause. So, this sentence which has two independent clauses and are connected by conjunction yet is a compound sentence. Choose the sentence with an adjective clause in it. Adjective clause क्या होता है? Adjective clause is a dependent clause that modifies a noun, usually starting with a relative pronoun or a relative adverb. ठीक है, relative pronoun कौन से होते हैं? That, which, who, whom, whose. और relative adverb कौन से होते हैं? When, where, etc. ठीक है, हमने ऐसा सेंटेंस चूज करना है जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज मौजूद हो. माई ब्रदर टोटली लव्स क्रिकेट. द कार्पेट्स दैट यू बॉट लास्ट ईयर हैव रॉटेड. प्लीज पुट दोज बॉक्सेस अंडर द टेबल. माई ब्रदर गेव मी अ बैट. द आंसर इज बी. द कार्पेट्स दैट यू बॉट लास्ट ईयर हैव रॉटेड. ये जो क्लॉज है दैट यू बॉट लास्ट ईयर, ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन कारपेट को और बता रहा है विच कारपेट्स आर बीइंग रेफर्ड टू. ठीक है, कौन से कारपेट रॉट हुए हैं जो लास्ट ईयर तुम लेकर आए थे. इट हैज एन एडजेक्टिव क्लॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच हैज अ नॉन डिफाइनिंग क्लॉज. नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को मैं बहुत अच्छे से पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब मैंने CSS 2025 का पेपर सॉल्व किया था, बट स्टिल यहाँ पर भी आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि ये क्या होता है. नॉन डिफाइनिंग क्लॉज
is a clause that provides extra information about a noun but is not essential to the meaning of the sentence. ठीक है, ये noun के बारे में extra information तो देता है but ये sentence में ज़रूरी नहीं होता, यानी इसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऑप्शंस दिए गए हैं. द सिटी वेयर आई वॉज बॉर्न इज स्मॉल, द बुक दैट यू लेंट मी इज ग्रेट, द वुमेन हु कॉल्ड यू इज आउटसाइड, माई ब्रदर हु लिव्स इन इस्लामाबाद इज द डॉक्टर. पहला ऑप्शन द सिटी वेयर आई वॉज बॉर्न इज स्मॉल, इसमें वेयर आई वॉज बॉर्न ये स्पेसिफाई कर रहा है विच सिटी आई वॉज बॉर्न. ठीक है, इसके बिना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता. द सिटी इज स्मॉल, कौन सा सिटी स्मॉल है भाई? द सिटी वेयर आई वॉज बॉर्न इज स्मॉल, जहां पर मैं पैदा हुआ वो छोटा है. द बुक दैट यू लेंट मी इज ग्रेट, दैट यू लेंट मी स्पेसिफाइज विच बुक. ठीक है, द वुमेन हु कॉल्ड यू इज आउटसाइड, वो औरत जिसने तुम्हें बुलाया है वो बाहर है. हु कॉल्ड यू स्पेसिफाइज विच वुमेन. माई ब्रदर हु लिव्स इन इस्लामाबाद इज अ डॉक्टर. नाउ दिस इज द आंसर. हु लिव्स इन इस्लामाबाद is the additional information which is not necessary to identify him. ठीक है, my brother is sufficient, is enough, that already specifies कि किसके बारे में बात हो रही है. So this is the answer. Identify the inverted sentence. Inverted sentence कौन सा होता है? जिसमें typical subject verb order जो है वो reverse हो गया होता है. दिए गए ऑप्शंस में से जो इन्वर्टेड सेंटेंस है वो है बार्क द डॉग लाउडली. द प्लेन फ्लू, इंफॉर्मेशन डैश द फील्ड्स, इंफॉर्मेशन ओवर द फील्ड्स, बिकॉज इट इंडिकेट्स अ मूवमेंट डायरेक्टली अबव एंड अक्रॉस द फील्ड्स. इफ आई हैड अ डिग्री आई कुड हैव अप्लाइड फॉर दैट वैकेंसी. सिलेक्ट द करेक्ट टेंस. इफ आई हैड अ डिग्री, अनरियल कंडीशन इन द पास्ट, I could have applied. Model perfect, यानी result in the past. तो ये जो पूरा sentence है, this is a third conditional structure which describes an unreal past situation and its hypothetical consequence. So the correct tense is past perfect. Identify the correct preposition. She is looking forward dash the holiday. She is looking forward to the holiday. Look forward to is a fixed expression which means to feel excited about something in the future. ठीक है, इसके साथ हमेशा जो preposition लगती है वो to लगती है. In a conference for the educational development in 1951, the main hurdle identified was the lack of trained teachers. Pakistan education statistics for the year 2021 to 2022 reflects number of out of school children are, according to the Pakistan Education Statistics Report 2021 to 2022 by the Pakistan Institute of Education, the number of out-of-school children in Pakistan for the year was 26.2 million. Government of Pakistan's Constitution, Article 25A, ensures to provide free and compulsory education to the children of Pakistan with age limit. Article 25A of the Constitution that was inserted via the 18th Amendment mandates the state to provide free and compulsory education to all the children between the ages 5 to 16 years. The school policy should be determined by the professional educationist. According to Fuel, element of management is. Henry Fuel identified 5 key elements of management, जिसको उसने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का नाम भी दिया. ठीक है, वो 5 की एलिमेंट्स कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, जिसमें प्लानिंग जो है वो मोस्ट फंडामेंटल है. व्हाट इज द क्रिटिकल ट्रेट ऑफ इफेक्टिव एजुकेशन लीडर्स? Flexibility in decision making, avoiding risk, rigidity in communication, micromanaging tasks. Flexibility in the decision making, which allows the leaders to adjust the policies based on feedback, emerging trends, and unforeseen challenges. Identify the characteristics of effective school administration. Ability to build relationship with stakeholders, autocratic decision making, poor communication skills, providing regular feedback. ये दोनों तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. द आंसर कुड बी ए और डी.
डिफरेंट केस स्टडीज़ को देखें या स्कूल लीडरशिप मॉडल्स को देखें तो दे एम्फसाइज रिलेशनशिप बिल्डिंग, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप एंड फीडबैक एज द पिलर्स ऑफ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अगर मुझे इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक को प्रायोरिटाइज करना है तो दैट विल बी ऑप्शन ए, एबिलिटी टू बिल्ड द रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स। हाउ डू द सीनियर स्कूल टीचर्स कंट्रीब्यूट टू करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान? By managing the school resources, by providing input and feedback, by teaching the classes, by evaluating the teacher performance, by providing input and feedback. If the manager is doing the evaluation of a project, he is at the stage of planning, organizing, leading, controlling. जैसा मैंने पहले बताया कि हेनरी फ्यूल के जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, उसमें 5 की एलिमेंट्स हैं और उन्हीं 5 की एलिमेंट्स को 5 स्टेजेस भी कंसिडर किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेज इज प्लानिंग, जिसमें होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में आता है एलोकेटिंग द रिसोर्सेज एंड स्ट्रक्चरिंग द टास्क। थर्ड इज कमांडिंग, डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग द एम्प्लॉयज। फोर्थ इज कोऑर्डिनेटिंग, विच एंश्योर्स हार्मनी अमंग द टीम्स। फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग, जिसमें आता है मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ द मैनेजर इज डूइंग द इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ही इज एट द स्टेज ऑफ, the answer is controlling. Which management function involves setting clear goals and objectives? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो उसका फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ही होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। सो द आंसर इज प्लानिंग। Primary benefit of using the management information system in educational management is improved decision making, increased funding, reduced administrative workload, enhanced student engagement. Improved decision making. Process of learning through observing and imitating others is called social learning. सोशल लर्निंग में पहला स्टेप क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, और दूसरा क्या होता है? इमिटेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं? वॉचिंग अदर्स बिहेवियर्स, ठीक है, और इमिटेशन में क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं उन्हीं ऑब्जर्व बिहेवियर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इफेक्ट वाज गिवन बाय। लॉ ऑफ इफेक्ट वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक। पूरा नाम था एडवर्ड थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ इफेक्ट वाज फॉर्मुलेटेड इन 1898 बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स विद एनिमल्स, फॉर एग्जांपल पजल बॉक्सेस फॉर द कैट्स। ये लॉ जो है ये क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट बिहेवियर्स फॉलोड बाय द सेटिस्फाइंग consequences आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड and the behaviors followed by the unpleasant consequences are less likely to reoccur. Who developed the theory of self-efficacy? Albert Bandura. According to the schema theory of memory, schemas are modified based on new information is called. Schema theory में schemas जो हैं वो update होते हैं through 2 processes, assimilation and accommodation. Schema होता क्या है? Mental framework for organizing the information. अब ये जिन 2 प्रोसेसेस के थ्रू अपडेट होते हैं वो है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या है? फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा। फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड कॉलिंग अ ज़ेब्रा अ हॉर्स बिकॉज इट फिट्स देयर करंट एनिमल स्कीमा, ठीक है। और एकोमोडेशन क्या होता है? मॉडिफाइंग स्कीमास टू इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन दैट डजंट फिट। फॉर एग्जांपल, लर्निंग दैट अ ज़ेब्रा इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ हॉर्स, thus creating a new schema, ठीक है। सो द schemas modified on the basis of new information is called accommodation. The model of curriculum which could not move above the elementary stage. Activity curriculum. Activity curriculum is primarily designed for the elementary stage or elementary level education, and it cannot move beyond this stage. The model of behavioral objectives of curriculum evaluation was presented by Tyler. Who said curriculum is a written plan? Smith, Stanley, and Shore. This statement, curriculum is a written plan, is attributed to them because they have used this statement in their book Foundations of Curriculum and Instruction. The word scaffolding in teaching refers to temporary or adjustable support, permanent learning support, standardized lesson plans, physical classroom structure. Temporary and adjustable support.
The method which enhances the student capability and demonstrating mastery of the specific skills. Competency-based learning. For better teaching learning process, the dash is the best method. Lecture method, project method, team teaching, interactive method. The answer is interactive method. Why it is considered to be the best method? Because it engages the students actively through discussions, question answers, and hand-on activities. Second, it promotes two-way communication between the teachers and the learners. Third, it adapts to the different learning styles. Fourth, it encourages the critical thinking and problem-solving skills. And fifth, the most important, provides immediate feedback for both the students and the teachers. So, it is considered as the best method. An extinction technique of classroom management where teacher dash any negative behavior. The teacher ignores any negative behavior. Select one strategy to engage the students. Test, lecture, punishment, group work. The answer is group work. Group work actively engages the students by promoting collaboration, encouraging participation, developing the critical thinking skills, and making the learning more attractive. Which strategy is effective for managing the classroom behavior of students? Redirecting misbehavior, ignoring student needs, loud and intensive expression, suspension from the class. Redirecting misbehavior. Which approach fosters a positive classroom environment? Punitive measures, competitive grading, collaborative activity, authoritarian teaching. Collaborative activity. How collaborative activity fosters a positive classroom environment? By building relationships among the students through teamwork and shared goals, encouraging the mutual respect and empathy, increasing engagement as the students actively participate and support each other. And last, the most important, reducing the anxiety compared to the competitive and punitive approaches. Tests meant for prediction on a certain criterion are called aptitude test. These are designed to predict the future performance or potential in a specific area. The test made to compare the performance of a student with other students is called criterion reference, norm reference, achievement, diagnostic. The answer is norm reference. SAT, IQ test, GMAT tests are the examples of which type of test? Criterion referenced assessment. Which statistical measure indicate the level of test difficulty? Mean, standard deviation, correlation coefficient, item discrimination index. The answer is item discrimination index. It is a statistical measure that evaluates how well a test question distinguishes between high-performing and low-performing test takers. So, it indirectly indicates difficulty. Collaborative research is a technique to address a specific problem or improve the practices. Action research. Action research is a collaborative research where educators investigate and improve their own practices through the cycles of identifying a problem, planning interventions, observing the outcomes, and refining the strategies. Next question. The type of research which deals with the classroom problem is action research. Action research is conducted by teachers themselves. Which organization is responsible for regulating and accrediting the teacher education programs and institutions in Pakistan? You all know Higher Education Commission, HEC. The textbook board was recommended to be established under Education Conference 1947, National Education Commission 1959, National Education Policy 1970, National Education Policy 1972. The answer is National Education Commission 1959. This is also called Sharif Commission, and it recommended the establishment of the textbook boards to standardize and improve the quality of educational materials in Pakistan. Next question. What is the main focus of Pakistan's educational development goals?
digital literacy, moral education, quality education for all, or higher education expansion? Quality education for all. What is the key role of a school counselor? Enforcing the school rules, resolving the academic conflicts, supporting holistic development, creating curriculum contents. The answer is supporting holistic development. The primary role of the school counselor is to foster the holistic development of the students by addressing their academic, social, emotional, and career-related needs. Next है, why is the aptitude test important in guidance? Because it predicts the academic potential. In preschool education, the focus of guidance is upon dash, exploration, adjustment, individual analysis और group guidance. Preschool education की बात हो रही है, the focus of guidance is upon adjustment. इस एडजस्टमेंट में क्या क्या आ जाता है? इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, स्कूल रेडीनेस एंड बिहेवियरल गाइडेंस, जिसमें आप सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज, Rogers' counseling methods are adapted to problems involving physical handicaps, educational guidance, vocational information, deep-seated emotional. Rogers' counseling methods mean Carl Rogers' person-centered counseling, and it is particularly effective for addressing the deep-seated emotional issues. तो स्टूडेंट्स, ये था FGEI का SST का पेपर जो कि कल हुआ था. उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ आई होगी. इफ़ यू लाइक माई एफर्ट, काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. And for more such videos, stay tuned to Corselia. Thank you. Allah Hafiz.